अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम फातिमा बुखारी है और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ एक बारात लुक का ट्यूटोरियल जो कि मैंने अपने भाई की शादी पे किया था। आई हैव रिक्रिएटेड दिस फॉर यू गाइज, आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लुक। काफ़ी काम है इसमें, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा फेस completely so bare है of any kind of product। मैंने सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है and I'm just gonna go ahead and I'm going to fill in my brows। और brows fill करने के लिए I'm gonna use the ELF की ये pomade। This is the brow pomade in the shade, this is medium brown। और इसको मैं यूज़ करूँगी with the help of my MSQ का ये एक angled brush है। इसको मैंने बस डिप करना है into the product और मैं इससे अपनी brows को अच्छी तरह से डिफाइन करूँगी। अब क्योंकि ये पोमेड है, आपने हेयर लाइन स्ट्रोक्स जो हैं वो आप यूज़ करेंगे टू फिल इन द गैप्स। और मैं बहुत थिक नहीं अपनी ब्राउज फिल करूँगी, जस्ट इनफ कि मेरी ब्राउज जो हैं दे लुक नाइस एंड फिल्ड एंड नाइस एंड नीट। दैट इज़ ऑल दैट आई एम आफ्टर। और जैसे ही वो हो जाएगा आई विल स्टॉप फिलिंग माई ब्राउज। ब्राउज फिल करने के बाद आई एम गोइंग टू यूज़ टार्ट शेप टेप का ये कंसीलर इन द शेड लाइट सैंड एंड आई एम गोइंग टू यूज़ ए फ्लैट ब्रश। और कंसीलर का जो ब्रश होता है उससे मैं अपनी ब्राउज को नेक्स्ट अब कार्व करूँगी। आई हैव डन दिस बिफोर इन द पास्ट, लेकिन आई विल टेल यू गाइज अगेन कि आपने जितना आपका फ्लैट ब्रश होगा उतनी आपकी ब्राउज अच्छी कार्व होंगी और उतना ही नीट आपका कंसीलर अप्लाई होगा। सो यू वांट टू पेस योरसेल्फ ग्रेजुअली और फिर आप अपना ब्राउज को अच्छी तरह से प्लेसिंग इट अंडरनीथ योर ब्राउज एंड कार्विंग इट नाइसली ताकि शेप अच्छी बने और इसी से आपकी ब्राउज की शेपिंग भी नीट हो जाएगी। ट्रेस इट एवर सो जेंटली ताकि जितना नीटनेस आ सके नीटनेस आए। एंड टेक लेस प्रोडक्ट ताकि इट डजंट लुक केकी और हैवी। एक दफ़ा कार्व कर लो, फिर उसके बाद जो बाकी का प्रोडक्ट आपके ब्रश के ऊपर रह गया है जस्ट ब्रिंग इट डाउन पैटिंग मोशंस में और उससे आपकी जो लिड्स हैं वो अच्छी तरह से कोट हो जाएंगी। And I'm going to be using this as a primer as well. Because I want to shape up my brows from the center as well, I'm using the same concealer onto the same brush and just carving out the center. And there you have it. इसको बस आप थोड़ा सा drag कर लो इस तरफ. And I'm also going to do it on this side. So that it looks kind of like nice and neat जब हम अपनी foundation application भी करेंगे तो। I'm not going to go all the way, but लेकिन just enough कि we have something neat to work with. Like that. आज के eye look के लिए I'm using the Huda Beauty की Rose Gold Remastered palette and I have used it on my Instagram lives. This is a very beautiful, beautiful palette and I'm going to be using this to create जो बारात look थी जो मैंने अपने भाई की शादी पे create की थी। Transition shade के लिए I'm picking up the shade called Demure onto a fluffy brush from Sigma. Tapping off the excess, इसको मैंने अपने crease में blend करना है। Well, crease से थोड़ा ऊपर ना crease में। और अच्छे आपने circular motions and swiping windshield motion में आपने color को place करना है और साथ साथ ही blend करते जाना है। So you're going to have a very nice sort of like a tea pink hue on your eye जब आप अपना makeup कर। Next, picking up the shade Sandalwood onto another brush from Morphe और इस shade को मैंने transition shade से नीचे नीचे blend करना है ताकि जो हमारा tea pink सा shade है that shows up nicely and we get a really nice brown kind of hue as well. I'm using circular motions इसको blend करने के लिए. It looks super pretty right now. Absolutely pretty. इसी brush के ऊपर I'm going to go ahead picking up the shade called Man Eater और इसको मैंने अपने outer third मैंने इसको place करना है and I'm going to blend it. Blending the color on the outer 1/3 ताकि हमारे पास एक बड़ा मजे का red सा fuse आ जाए because मेरा जो दुपट्टा है that is all red. So I wanted कि ये इस तरह की look आए and I'm blending it constantly. I'm not gonna go all the way in. अगर all the way in जाओगे तो जब आप कट crease करोगे इतना अच्छा नहीं लगेगा.
Then you blend it जब तक कि आपको फील हो कि वो ब्राउन जो आपका प्रीवियस शेड है वो फ्यूज हो गया है into the red. दोबारा से डीमियर वाला शेड हम लेंगे और इसकी एजेस को हम और सॉफ्टन करेंगे बिकॉज वी वांट के अच्छी तरह से सॉफ्ट ब्लेंड हो. जब भी आप डार्कर कलर्स यूज़ करो उसको हमेशा लाइटर कलर से जो आपका ट्रांजिशन शेड होता है उसके साथ उसको ब्लेंड करो ताकि वो बहुत अच्छा ब्लेंड लगे और कोई भी हार्श लाइंस ना हो. अगर बारी है कट क्रीज की. कट क्रीज के लिए हम यूजिंग द सेम कंसीलर जो टार्ट शेड टेप का था. और पहले आई एम गोइंग टू मैप आउट जिसको मैंने कट करना है. और बाकी का जो है आपने प्रोडक्ट जो बच गया है आपके ब्रश के ऊपर उससे आपने इसको फिल कर लेना है इन स्टैम्पिंग मोशन. लिड कट करने के बाद we're going to go back into the same shade Man Eater जो रेड वाला शेड था और उसको हमने इसकी एजेस जो हैं उसकी थोड़ी सी ब्लर करनी है. And use a light hand ताकि आप अच्छे से इसको blend कर सको. And if you notice, I'm kind of like bouncing my brush. मैं drag नहीं कर रही, bounce कर रही हूँ ताकि वो अच्छा soft fuse आए. अगर if I drag my brush तो वो pigment harsh हो जाएगा. And I don't want to make it harsh. I want to make it nice and soft. Going back into the shade called Demure, ये वाला. और इसको मैंने इसी तरह place करना है onto my lid ताकि we have another soft fuse. और देखो कितना प्यारा लगना शुरू हो गया. Looks super pretty. अब बारी है शिमर की और शिमर के लिए I'm going to be using ये वाला शेड. This is called Moon Dust. और ये मैं BH Cosmetics का ब्रश यूज़ कर रही हूँ and this is so good for placing this product. बहुत ज़बरदस्त. This is a very nice creamy kind of texture इसका है. It's very pretty. शिमर शेड लगाने के बाद अब बारी है ग्लिटर की and I'm using the Stila glitters. एक जो है this is Smoky Storm और दूसरा जो है this is Diamond Dust. I'm going to mix them both और ये दोनों मैं अपनी lids के ऊपर लगाऊंगी to achieve a very nice silverish gold effect. अच्छा मैंने इसको I mixed the glitter on the back of my hand और फिर मैं इसको लगा रही हूँ with one of the wands जिसमें सिल्वर है जो डायमंड डस्ट इसमें पड़ा हुआ है क्योंकि otherwise if I apply it thick it is going to look too heavy और कलर जो है वो उस तरह से नहीं बनेगा. So this is what I did. मैंने अपने हाथ के ऊपर इसको मिक्स किया and basically I applied it with the same wand and this is what it looks like and I'm kind of like loving कि ये कैसा मज़े का ये लग रहा है. Now while this dries, स्टेला के वैसे भी जल्दी ड्राई हो जाते हैं. While this dries I'm going to go ahead and I'm going to apply some lashes and I will be back. Lashes के बाद look कुछ यूँ है और इसके बाद अब हमने क्या करना है we're going to go ahead थोड़ा सा highlighter मैं अपनी brows के नीचे लगाऊंगी just for effect. I'm going to use the same shade Moon Dust and I'm going to pick it up on a Morphe brush. Ooh, look at that. So pretty. So pretty. Okay जी, primer के लिए we're using the Smashbox का Photo Finish. This is the foundation primer. ये smooth and blur करता है. It's a very nice blurring primer and I love using it.
So I'm going to focus this primer mostly onto my under eye area because यहाँ पे मुझे आजकल dryness ज़्यादा होती है and I want कि मेरी foundation जो it looks super flawless. I'm just gonna go ahead and apply this. अपने lips को भी coat करूँगी. The key to a flawless foundation, ये जो राज है flawless foundation का, is in your moisturizing and your priming. कि आप कितना अच्छा अपनी स्किन को प्राइम करते हो और कितना अच्छा आपका प्राइमर है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी फाउंडेशन एप्लीकेशन को. So once that we are done, I'm going to go into my foundation. और foundation के लिए I ended up using none other than Anastasia Beverly Hills की ये foundation है and this is in the shade 270C and this is my shade. मैंने आप लोगों को I think in the last video as well यही बताया था कि I liked using it. It is slightly darker than my actual skin color, but it did not bother me because I ended up using it with a concealer and everything, and plus my skin tone वैसे भी it fluctuates throughout the year, so I'm kind of happy that I have slightly a foundation that is a little tanned. मुझे ये अच्छी लगी थी, so I'm like good with it. So इस तरह मैं इसको apply कर रही हूँ with my hands, and this feels, I have reviewed it. I don't think I'm going to review it now, but I love कि ये कैसे it looks so natural. बिल्कुल भी heavy नहीं लगती. Okay, so बाकी की foundation I'm picking it up onto my sponge. Real Techniques का मैं sponge use कर रही हूँ, and I'm just gonna go ahead and I'm going to blend it onto my skin. और यहाँ से basically आपकी foundation blend होना start हो जाएगी. Using the same concealer Tarte Shape Tape ka light sand mein, I'm going to go ahead and I'm going to use this to brighten my under eye area. I'm not going to use a lot, just enough कि मेरा जो dark circles हैं, थोड़ी बहुत भी जो भी darkness है, I'm going to just brighten it. So there we have it. कोशिश करें अपने concealer को थोड़ा ज़्यादा drag कर लें outwards ताकि वो blend अच्छे से हो जाए. और एकदम आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है. Doing the same here. Contrary to what most bloggers do कि इसको Tarte Shape Tape को especially आप लगा के छोड़ देते हो and then you blend it. No, this has a tendency of setting, तो बड़े ध्यान से इसको आपने छोड़ना होता है. So you want to blend it as soon as you apply it. And one final step जो कि normally मैं अपनी foundation routine में नहीं करती, but with this foundation I do this. So I just like to draw this underneath where I would normally contour. और इसको बस मैं downward blend कर लेती हूँ. अब बारी है face set करने के लिए और and I'm going to use the KatVonD का ये loose setting powder, locket setting powder in the shade Translucent. And I absolutely love this powder. Or sponge की बजाय I'm going to be using a brush this time to press the powder down. And I love the finish. क्योंकि translucent है, this is not going to look overly heavy or anything. Color भी change नहीं होगा. So yeah, I love that about this. और जहाँ जहाँ basically मैंने concealer लगाया था, वहाँ वहाँ मैंने अपना setting powder लगा लेना है. और because मैं ब्रश की मदद से इसको अप्लाई कर रही हूँ, I'm not going to dust it off later.
अब हम अपनी लोअर लैश लाइन कंप्लीट करेंगे और इसके लिए I'm using an angled brush like this one और I'm going to go ahead and I'm going to pick up the shade called Cocoa और मैं इसको mix करूँगी with Man Eater which is a red shade. अब आ रही है inner corner के लिए and I'm using a pencil brush from Morphe और मैं use करूँगी ये वाला shade called Bubbly. Do you see how pretty this looks? So pretty. अब बारी है contour की and I'm using the KatVonD shade light contour and I'm going to be using these two shades for my contour. And you want to start your contour a little higher than you normally would. यहाँ से color place करें and then you go up and you want to bring it down into your hollow like this. ठीक है? This gives a very nice slimming effect. ये मैंने शादी पे try किया था and I loved it. मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी थी. So yeah, I'm sharing this with you guys right now. And you want to use the darker shade right into the hollow. And just keep blending it and it will start to look perfect. So you want it to look like chiseled. Jitna chiseled dikha sakte ho. Doing the jawline और jawline के लिए I like to mix both colors. उससे ये होता है कि बड़ा अच्छा सा gives the well illusion of a slimmer face. Jawline क्योंकि मेरी थोड़ी सी चबी हुई भी है. I'm kind of blending it really nicely. Nose contour के लिए I'm going to be using this shade alone. I'm just going to use it on any brush जो कि इसकी shape थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए. चिपटा सा brush होना चाहिए ताकि आप इसको अच्छे से blend भी कर सको साथ साथ. बारी है blush की and I'm going to be using the Tarte blush Bazar और इसमें I'm going to use basically, let me just pick this piece up. I'm going to be using this shade. बहुत प्यारा सा, बड़ा मजे का. It's a very nice, it looks very nice and warm और bright. लेकिन जब मैं इसको apply करूँगी on the apples of my cheek, it's not going to look that intense. Soaping it up with this brush over here. For highlighter, I'm using the Ofra highlighter in the shade Rodeo Drive. ये बड़ा मजे का golden सा highlighter है and it looks so pretty. I am obsessed with Ofra के highlighters. Taking up a small amount. Do you see that? A small amount does such a beautiful highlight. Intense करना है तो ज़्यादा ले लो. बहुत ध्यान से लेना पड़ता है. It has a tendency of going super intense. I'm loving it. Cupid's bow. For lipsticks, I'm digging into my BH Cosmetics का ये pouch है. It's a nice set of 6 lipsticks. और इसमें से I'm going to be using this gorgeous red lipstick. And this is called Maria. Okay जी, so let me get back with my jewelry और मैं अपना दुपट्टा शुपट्टा सेट करके आती हूँ and let's see what it looks like. Alright you guys, we are at the end of this video. I hope आप लोगों को ये tutorial पसंद आया होगा. I put in a lot of effort, believe me. मैंने काफ़ी सारी चीज़ें दोबारा से निकाली for you guys. So if you did like this video, don't forget to give me a thumbs up. और अगर आप new हैं मेरे channel पे, don't forget to subscribe. क्योंकि next video में I'm going to be recreating वलीमा look जो कि मैंने अपने भाई की शादी पे create की थी. I really hope that you like my entire ensemble. I'm sure आपको पूरा तो नहीं नज़र आ रहा होगा अभी पर, लेकिन obviously अगर आपने मेरे Instagram से मुझे देखा हुआ तो this was my exact
outfit on that day. I loved how this was perfect white with a nice red dupatta जिस पे already काम शाम हुआ हुआ, and I blended it so nicely with this look. Glitter जो मैंने Stella के use किए थे, they're doing such a wonderful effect with this look. I'm loving it. I'm absolutely loving it. So yeah, this was it. अगर आप लोगों की कोई requests हुई for me to create on my YouTube, नीचे comments में अपनी राय देना मत भूलिएगा या अपने suggestions देना मत भूलिएगा. And inshallah I will see you guys in the next video. जो products मैंने आज use किए हैं, I have already mentioned them in the description below. अगर कोई product मेरे से miss हो गया हो, then just mention in the comments. मैं उसको वहीं पे फौरन आपको mention कर दूंगी. And with that being said, much love. You guys take care, and I will see you guys in the next one. Allah Hafiz. Mwah.